manager. So, Madam will be deliberating upon financial schemes for agriculture and allied activities. See, until now we have been, teaching you that how to start entrepreneurship and all. Ultimately, it's all the monetary support that matters a lot. So, Madam will be discussing upon that. Madam, thank you so much, because we know JK people are never free. You have such a busy schedule. So, despite that, you agree, ma'am. Thank you so much. Kindly start your presentation. Thank you. I should be thanking you for giving me a chance to come with together with students. It's always wonderful. It's really it takes you back to your days when you were in the university and all that. It's really I don't find it as a burden or anything. I really want to share all this, whatever I can and help you. I want to share. So before we proceed with this, I would like to tell you that there are two ways all entrepreneurs, whenever they want to go for a loan or help for establishing their business and their units, there are two ways they can do it. One is they directly go to the bank, other is they go through government sponsors. And it's always better for a starter to go for the government help, because bank doesn't provide you any subsidies, government does. So the topic for today that I have been told is that food processing, formalization of that food processing unit. What I want to discuss with you is, like all entrepreneurs, new entrepreneurs, they should first and foremost get registered with Udyam. Because Udyam, whenever you want yourself to be considered MSME, micro small enterprise, you need to have a Udyam registration. And Udyam registration is very easy. You can get it done online. Udyam is the portal, right? So when you want to be benefited for MSME, you need to be registered as MSME, and for that you have to do Udyam registration, right? Now there are two ways that I told you before, either you go for a government sponsored thing or you go directly for the bank. When you go for a government sponsored thing, you get subsidies there. At the moment, for food processing, there are two that I could find. Two, websites you can log in on, where you can register yourself, give your whatever you want to do, and your case goes to the committee where they check out on whatever you want to do. They deliberate on it, and then they decide if it is feasible or not. So they either say yes or they say no. When they do that, after that it comes to a bank. Then again, it comes to a bank, finally finance comes from bank, but in that case you get subsidy. But when you directly go to a bank, you don't get subsidy, right? Now for this food processing enterprise, what the government has done, that PM formalization of food processing enterprise, I think you may be aware of it. This is a sponsoring department of Ministry of Food Processing Industry. Can we in this case, anyone above 18 years of age, okay, do I have to do this? It's not moving. These are all the sponsored schemes in agriculture. These are all. PM formalization of micro food processing enterprise is what pertains to you, because that is what you are interested in. This is from Ministry of Food Processing Industry, and the subsidy you get is only for those who are registered under MSME. If you are not registered under MSME, that is the Udyam registration, then you don't get the subsidy part of it. Fine? Why is it not moving? Okay. This is other part of it. One district, one product part. One district, one product. These are the districts in our state
And these are the products that have been identified with these districts. So, but like it's not like you don't, even if you are from Bandipora, you want to go into something else and you will not get any help for that. It's not like that. But these are the basic products. They will get the benefit. They will come first. If you are from Anantnag and a fish-based product is your enterprise, what you want to develop, so you will be getting preference there. But if you want to go into something else, you will be considered, but then you will come second for it. Right? Fine? Did I get you? Yes. These are the products that are related with their state. I'm using this for the first time. This is first time I'm giving a lecture like this, so you'll have to bear with me. Now comes where the borrower is very concerned. It's the security part of it. You are really concerned about that. Again here, if you are registered as an MSME, then you are going to get help from the government. Collateral security for MSME is like collateral primary is whatever you produce, that becomes a primary security because it's produced from the finance you get from the bank, so it becomes a primary security. It's anyway hypothecated to the bank, right? Then the collateral is what worries you because then you have to think about the guarantee and all you get, it worries you. But if you are registered with MSME, you don't need to worry about collateral security because CGTMSE, you get the benefit of CGTMSE cover. Credit Guarantee Scheme is a scheme which has come to your rescue through the rescue of entrepreneurs, fine? And here they give the cover. But they charge you a minimal fees. They charge you a fee and that is to be borne by you. They charge annual fee. The guarantee scheme people, they charge you fee. Then again, it is your choice. Either you go for the fee for CGTMSE or if you can reduce guarantor, where it becomes a free one, where you don't have to pay any fee. It's like your choice. But if you don't have a guarantor, you can always ask for CGTMS cover, right? And this is collateral fee I'm talking about. This is just for MSME. If you are not a MSME, you get a loan up to 1.60 free of guarantee. But above 1.60, you need to give up to 10 lakh. You need to give third-party guarantee of 2 people. See? Am I clear up to that? Yes. Now with this, you can read it. I don't need to go. You can get it from the slide. What I want to tell you is the subsidy part of it. Whatever your project cost is, you have made a DPR and you have a project cost. Whatever your project cost is, 35% will be capital subsidy by the government. Right? But that capital subsidy is always back-ended. Back-ended means like you start a project, right? You get the subsidy part, but that is kept in another account with the bank for 3 years. It has a 3 years cap on it. If you are like going flourishing, you are doing your business well, your entrepreneur, whatever is going on well, and you have not defaulted any time, after 3 years of time, and during that 3 years of time, whatever the capital subsidy is, that is the 35% of your basic, whatever your loan amount is, you are not charged interest on it because it gets covered. It is linked to your basic loan amount. Like if you have 10 lakh of loan, 3,50,000 is the capital subsidy. 3,50,000 is linked to your loan account. 3,50,000 doesn't get. It's not charged interest on that amount. So you'll have to pay interest for just 6,50,000. Got it? That is what capital subsidy you get here and back-ended capital subsidy. And after those 3 years, when your account is running fine, that amount gets credited to your loan account. After 3 years, after a cap of 3 years, that loan amount gets credited to your loan account. That means
you have just 6,50,000, and then the EMI is recalculated for the EMI. I'm getting, or like, am I fine with the language, or do I need to change my language? Because I don't do it, that's what I wanted to say. So, AMI gets recalculated. Now the AMI you have to pay is on 6,50,000. It's like that. I'm giving you an example. Fine? I'm sorry. अभी तक कोई सवाल है इसके बारे में? ये है वेबसाइट जहां आप लॉग इन कर सकते हो. दिस इज द वेबसाइट, यू नीड टू नोट इट डाउन. यहाँ आप लॉग कर सकते हो अपना क्या जो भी आपका ये है. तो ऑल योर डिटेल्स, यू हैव गिवन ऑल योर डिटेल्स, एंड देन ये जाता है एक कमिटी में. वहाँ वो देखते हैं कि ये फिजिबल है नहीं है. सो दे आर द अप्रूविंग. आफ्टर दैट दे कम एंड चेक. ये देखते हैं आप लोगों ने लीज कहाँ लिया है, लैंड कहाँ लिया है, कहाँ पे आपको सेटअप करना है यूनिट. लीज आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स इसमें डालने होते हैं. वो जो आपने लीज अग्रीमेंट किया है या रेंट अग्रीमेंट किया है वो सब आपको इसमें डालना पड़ता है. तब जाके आपको ये चीज मिलती है. तो इसमें आपका लोन अमाउंट का लिमिट नहीं है कोई. 2 करोड़ तक शायद देते हैं, 3 करोड़ तक अगर ग्रुप होगा. लेकिन उसमें 10 लाख का लिमिट होता है. मैक्सिमम सब्सिडी जो इसमें मिलती है इंडिविजुअल्स के लिए वो 10 लाख है. 10 लाख से ऊपर नहीं जाता. ठीक है, ठीक है. 10 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल जब होता है तो 10 लाख से ज्यादा लिमिट नहीं जाता. ग्रुप कैटेगरी में 3 करोड़ का सब्सिडी तक जाता है. 35 ग्रुप कैटेगरी में. इंडिविजुअल में 10 लाख इज द मैक्सिमम सब्सिडी यू गेट. एनी क्वेश्चंस? आप बताएं. आप पूछो बेटा. आप बोल रहे थे ना कि ग्रुप वाला. हाँ, ग्रुप वाला. जो ग्रुप वाला है वहाँ भी 35% ही मिलता है, लेकिन उसमें कैप है 3 करोड़. जो इंडिविजुअल है उसमें भी 35% मिलता है, लेकिन वहाँ कैप है सब्सिडी का 10 है. ठीक है. ग्रुप्स का कुछ है लाइक मैक्सिमम कितने होने चाहिए? नहीं, इट्स अ ग्रुप. We form a group. क्योंकि ये छोटे-छोटे यूनिट्स एक्चुअली ये जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं किसी विलेज में या किसी वहाँ छोटे-छोटे यूनिट्स है. ये मकसद वही है कि इनको सबको इकट्ठे लाए, इनको फॉर्मलाइज करें. जो स्कीम का मकसद ही ये है कि ये फॉर्मलाइज हो जाए ताकि इनमें थोड़ा सा शऊर आ जाए, ऑर्गेनाइज हो. इसमें लेकिन वो ट्रेडिंग वगैरह नहीं आती है. जैसे दूध बेच रहा है कोई, मीट बेच रहा है, फिश बेच रहा है, रॉ, वो नहीं होता है. दिस इज ऑल प्रोसेस. ये उसके लिए नहीं है. दिस इज प्रोसेस. और कुछ इसके बारे में? अब दूसरा एक है मिशन यूथ. मिशन यूथ के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो. हाँ, आपको ये फैसिलिटीज मिलेगी. लेकिन मैंने एक चीज देखा है मिशन यूथ में. मैंने कुछ 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखा था. तो वहाँ बच्चे बोल रहे थे कि मिशन यूथ हमको मिसगाइड करता है. मिशन यूथ कुछ बोलता है और फिर होता कुछ और. मिशन यूथ में आपको बोलते हैं कि हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन है. इंटरेस्ट फ्री लोन है, लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन तब है जब आप अपना अकाउंट अच्छे से चला रहे हो. क्या होते हैं, जो भी सब्सिडी होती है तब मिलती है जब आपका यूनिट, जब आप डिफॉल्ट नहीं करते हो बैंक के साथ, जब आपका यूनिट ऑपरेशनल है. ये नहीं है कि यूनिट ऑपरेट ही नहीं कर रहा है और फिर आपको सब्सिडी, और जितना भी इंटरेस्ट चार्ज होता है ना वो फिर क्लेम हो जाती है. इंटरेस्ट तो लगता है अकाउंट में, लेकिन वो क्लेम हो जाती है और वो फिर मिशन यूथ से आता है. It's that way interest free. And that is it has a cap of 2 lakh on that. यहाँ पर आपको 18 लाख तक लोन मिल सकता है. 18 लाख तक लोन मिल सकता है. और इसमें भी एक वेबसाइट है. आप ये आप पढ़ रहे हैं?
all, like this is something you already know. 18 to 14 years का है इसमें और इसमें एक और चीज़ है, अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर आपका ऑलरेडी कोई ऐसा लोन है जिसमें आपको सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से, then you are not eligible for this. Like in this case, you get subsidy from the government only once. Like you won't be getting into this loan if you already are availing a loan from the government where you have been given subsidy, and again, if you have defaulted somewhere, you are not eligible for this. Okay? 90% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, इसमें 5%, इसमें 10% का मार्जिन होता है। 90% प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होता है वो आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें सॉरी आई वाज नॉट यूज और प्रोग्राम, आई एम सॉरी। इसमें आपको 5% का मार्जिन मिशन यूथ देता है, 5% आपका अपना स्टेक है। ये स्टेक जो आप लोगों से लेते हैं ना, ये डेलिब्रेट होता है, ये इसलिए डेलिब्रेट होता है कि ताकि आपको अपने पैसों की फिक्र हो, राइट? जब आपको लगेगा कि हमारा भी कुछ इसमें अपना पैसा है, तो फिर आप भी परेशान रहेंगे कि हमारा पैसा खराब नहीं होना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, राइट? अगर ये सारा आपको मुफ्त में मिलेगा, फिर आपको परेशानी नहीं रहेगी। दैट इज व्हाई 5% का आपका अपना स्टेक रहता है, 5% इसमें 10% का मार्जिन रहता है, 5% आपका रहता है, 5% मिशन यूथ से आता है, ठीक है? इसमें भी अगर एमएसएमई में कहे तो आपको पीजीएमएस कवर होता है। अगर एमएसएमई है, वो एमएसएमई के लिए मैंने आप लोगों को बोला, आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इज अ मस्ट, यू हैव टू डू इट। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन से यही सिर्फ एक बेनिफिट नहीं मिलता है कि आपको जो भी एमएसएमई के अंडर बेनिफिट्स है ना, लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट का पहले ही फर्क आता है, 0.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्क आता है। जो भी बेनिफिट होता है ना, आपको बाहर से मशीन भी लानी है, उससे आपको सब्सिडी मिलती है। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन से आपको पहले आप प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाते हैं, फिर जो भी उसमें बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मेरे को लगता है इस वक्त आजकल तो ट्रेडर्स जो होते हैं, दुकानदार, तो वो भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में आ जाते, वो भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करते हैं, बिकॉज दे गेट दैट 0.50% of benefit and they come into priority sector. ठीक है? अब एमएसएमई ये जो है आपका मिशन यूथ, इसमें एक ये है, आपको अगर ज्यादा लोन चाहिए, 18 इसमें एक लिमिट है। अगर आप नहीं रजिस्टर्ड हो विद एमएसएमई तो आपको मॉर्गेज देना पड़ता है। दिस इज विद यू पीपल, यू कैन हैव इट एनी टाइम, दिस इज विद यू, यू डोंट नीड। एक प्रिंट आउट निकालना इसका, और एमएसएमई, और ये जो है ये एक चीज मुझे बोलनी थी इसमें मिशन यूथ में, इसमें जो बेनिफिट मिलता है आपको एक और, यू गेट ए इंसेंटिव ऑफ 30%। 30% इंसेंटिव आपको मिलता है ऑन ऑल योर बिजनेस डेवलपमेंट। जितना भी आपका बिजनेस डेवलपमेंट होगा ना, ईयर ऑन ईयर 5 साल तक आपको मिलता है इसमें बेनिफिट, दैट कम्स टू 30% ऑफ द लोन अमाउंट। बिजनेस डेवलपमेंट इज आपका इस बार का सेल कितना हुआ, 1 लाख, अगले साल आपका सेल हुआ 1.5 लाख,
तो कितना 50,000 का फर्क आ गया, तो दैट इज योर गेन, एंड देन यू गेट 30% ऑलरेडी. दैट वे यू गेट 30% ऑफ. पहले साल 10%, फिर 20%, फिर 30%, ऐसे करके 40% आपका ऑलमोस्ट ये 30% जाता है. ये आपको मिलता है गेन in addition to other incentives. Anything you want me to clear? Mudra और ये is almost the same. मुद्रा ये, this is मुद्रा. अब इसमें MS ये जो है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ इस मिशन यूथ में बहुत इट्स अ ब्रॉड थिंग. इसमें सिर्फ प्रोसेस ये आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिट्स नहीं आता है. इसमें आपके कोचिंग सेंटर्स आते हैं जिनको कोचिंग मिलती है. इसमें आपके व्हीकल लोन्स आते हैं. दिस इज अ ब्रॉड थिंग, बट व्हाट यू आर कंसर्न विद आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट. इसमें जो ये बहुत बड़ी ये मिशन इसमें हमें इसमें भी आपका उद्यम के साथ if you want, like you are a MSME, micro small enterprise, and you want to get registered as MSME, you have to. उद्यम एक टाइम registration, it's a one-time registration, and you get benefits for life. ये दो स्कीम्स हैं जिसके अंदर आप अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप करना चाहते हैं, बैंक से आपको लोन मिलेगा. और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम. अब एक और स्कीम है जो बैंक में निकालेंगे. आई डोंट थिंक आप लोग, ये है इसका, दिस इज द वेबसाइट, राइट? नाउ दिस इज, and I don't think you will like this. You are. Asset-based easy agri loan scheme. This is for the banks. That the banks offer. यहाँ पहला जो डिफरेंस है उन दो स्कीम्स में और इसमें हम आपसे सिक्योरिटी लेंगे और सिक्योरिटी लेंगे हम मॉर्गेज आपसे. तो इसमें आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी. इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी. आई डोंट थिंक और कुछ मुझे बोलने की जरूरत है इसमें. उसीलिए मैंने वो दो स्कीम्स आपको पहले बोली, बिकॉज एज न्यू एंटरप्रेन्योर्स, एज लाइक यू वांट टू स्टार्ट न्यू स्टार्टअप्स, तो व्हाट आई थिंक इज लाइक यू शुड गो. फिर आगे जाके जब आपको बहुत बड़े लोन्स चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास स्कीम्स है. गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स रखी है जो आप जहाँ आपको बहुत अच्छी सब्सिडी, वो वाला जो आपका वो 3 करोड़ तक का सब, वो बहुत बड़े लोन्स देते हैं. फिर लेकिन when you like, and you get CGTS cover up to 5 crores of rupees because that is small and medium enterprise. So you don't need to worry about your security part of it because CGTMS covers. बच्चों तक आप चीज रसा because फी जो होता है एनुअली फी देना पड़ता है. अभी तक 1.5% के हिसाब से देना पड़ता था. अब 0.37 to 1.37% के हिसाब से देना पड़ रहा है. लेकिन वो एनुअल होता है, दैट इज इन एनुअल मोड, राइट? सो देन वहाँ पर आपकी चॉइस है. वहाँ पर अगर आपके पास मॉर्गेज है, आपका अपना लैंड है, अपनी प्लांट एंड मशीनरी, तो वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी जो भी होती है, आपको पता है ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सी होती है? टर्नओवर के हिसाब से और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के लिए. प्लांट एंड मशीनरी में अगर आप जो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, टर्नओवर 5 करोड़ है, दैट इज अ माइक्रो. जिसमें 10 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट है, 50 करोड़ का टर्नओवर है, प्रॉफिट टर्नओवर ऑफ द कम दैट कम्स इनटू स्मॉल. और एमएसएमई बस यही है. इन सब को आपको सीजीटीएमएस कवर मिलता है. इन दोनों केसेस में you are covered by credit guarantee. Want me to tell you something else? Anything else?
ये जो आपका जो हम बैंक वाले लोन देते हैं ना, जो एग्रीकल्चर का ये होता है, इसमें एक चीज रहता है, दिस इज एज गुड एज अ टर्म लोन। इसमें आपको और कुछ देना नहीं पड़ता है, बस हम देखते हैं आप मॉर्गेज हमें कितना दे रहे हो। हमारा 100 इतना % का ये है मॉर्गेज है, इसका हम इतना लोन देंगे। और इसके एक चीज और है, इसमें आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखना चाहते हैं, बैंक डिपॉजिट्स रखना चाहते हैं, मेटलाइफ पॉलिसी रखना चाहते हैं, एनएस, ये भी आप एज सिक्योरिटी रख सकते हो। सिर्फ इसमें बैंक जो ओन डिपॉजिट है इसके अगेंस्ट हम सिर्फ 90% लोन देते हैं। मार्जिन आपका 10% रहता है, 90% लोन हम देते हैं। बाकी केसेस में आपका 30% मार्जिन रहता है, 70% हम लोन देते हैं। यस, और ये वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। आप बताओ मुझे एनी। I am very thankful that you have provided insights about podium and Pradhan Mantri formalization of micro food processing mission. But as the topic of the workshop is particularly waste management. Ma'am, I would be thankful if you provide me some insights about if I as an entrepreneur open a waste treatment plant or a scrapping industry, do we have to approach these initiatives? No, I don't think so. Not this one. You can go for Mission Youth, but not Prime Minister, because this is just a food processing unit. This is just for food processing. You want to go, you can go for Mission Youth. In Mission Youth, you can apply for anything. In your entire professional life, do you have any client that visit to you for waste treatment plant or recycling of scrapping? We have project loans, like we have very big project loans where we have some units that are set up for processing of walnuts, like cherries. They are making jam. They have waste. They have it as a subsidy. Like this is a waste management system. They need to have something like STPs and all. That is a prerequisite in those cases. Like not as a waste management something in a different way, in like altogether alone. I have not done it. So far as I am concerned, waste management has been dealt with me for big projects, where like hotels, establishment of some factories, where this is a must. This is the first thing we should look into. Like if they are able to manage their waste. Only after that do we go for the schemes. Because it's an important. Because waste management as a different thing hasn't been dealt with us. Because it comes with waste management for us, for me, comes with establishment of units. Like if you are establishing a processing unit, you need to have a waste management system. Right? उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है ना, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव वेस्ट। एमएसएमई में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये नहीं बोलना है कि मुझे आप ये रजिस्टर कर लो। आप एज एन इंडस्ट्री यू रजिस्टर, एज अ स्टार्टअप यू रजिस्टर एज अ स्टार्टअप। यू डोंट नीड टू डू इट कि मेरे को ये काम करना है। You don't need to. You can even traders register as they don't give whatever they are doing trade. You have to register as a fresher in that, and for that you need a PAN card. That is it. The important thing is about that. You need to give your PAN number and your Aadhaar number and the nature of business. You just give it. We have some certifications like SI or other food producer order. So in this regard, what we have to This is something when you start with. This is a startup. So this is going. Peer formalization has been done. Like this is not something pertaining to banking, but what peer formalization
why the government has gone up for this scheme is just because they want to, like, for hand-holding sort of a thing for a new entrepreneur, where they want to tell you how to go about your business. They help you with your DPRs, they help you with your those certifications and all. That's their job too. That is why they are wanting to formalize it. Anything else? Actually, इसमें अगर आपका waste processing system ऐसा है कि you want to develop a food product out of that, then you will come under PFME जो Prime Minister's formulation of my food processing industry से, because हम लोग एक इस पे बना रहे एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था 20 लाख का इनके साथ सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ, तो उसका हम पॉलिसी बना रहे हैं, तो उसमें हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी ये बट विजाविज इफ इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दूसरा जैसे गुरबान ने सही बात बोली, आपका ये स्वच्छ भारत मिशन है, उसके अंडर भी कहीं स्कीम्स है अगर आपको प्रोसेसिंग करना है, बट वी टेक इट एज एन इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको करनी है फॉलो, ठीक है। मतलब देयर इज नो सच सेपरेट सिस्टम फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेप्ट फॉर जो आपको फॉर एग्जांपल यू नीड टू गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम पीसीबी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बाकी वो चीजें वो आपको लानी है। If it is with the food products, you can go for the PMF, जो Ministry of Food Processing Industries का scheme है। And if you specifically want, some schemes from that, then you can go for the Swachh Bharat scheme. वो इसमें है, ठीक है। और इसके बगैर भी जैसा आप लोगों ने कल डिमांड किया था, मैंने एक लेक्चर को अरेंज कराया, वो कल ऑनलाइन है। He will tell you all information about कि क्या-क्या चीजें हैं। I'm actually. Yes. Are there any schemes specially designed for women? Yes. There are a number of schemes specially designed for women, and there are benefits that women get for all these things. Like just this CGTMS cover, there are certain people who don't fall under it, but women are separately, they come into it in any case. Scheduled caste, scheduled tribe, and women, they come. Women entrepreneurs are always like they have, the first benefit they get, even in banks, is they get 0.50% of rebate. I think what I think personally, women should not be asking for rebates anymore, because women are more forward than men. I think it's for the men to do it. I really think that way. I really think it that way. Because wherever you go, even if you go for this PM formalization, if you check it out, they are getting more applications from women than men. They are getting more applications. So why should women ask for any favors? I don't think we should. Should we? This is almost all women class. Should we? I don't think we need. But we have. आपको पता है ये जो women का, I don't remember exactly who the lady was. उसने तो केस कर दिया. उसने बोला क्यों आप हमको ये तो अपार्टहाइड, आप क्यों हमको अलग निकाल रहे हो? आप क्यों हमको women को ये why? I don't think we need it. But we have. We have women entrepreneur policies where women get benefits. प्रोग्राम में एक प्रोग्राम है ना जो वुमेन्स के लिए अलग से है। किसमें? जी। एंड स्टैंड अप इंडिया इज आल्सो हर एक जगह भी आप कोई भी पॉलिसी देखोगे, वुमेन्स को एक बेनिफिट मिलता है। पहले आपका एजुकेशन लोन है ना, आपका एजुकेशन लोन, वहाँ पे आपको 0.50% का इंटरेस्ट रिबेट मिलता है पहली बार। मुझे लगता है मर्दों के साथ नाइंसाफी होगी। Because I think अब men empowerment की जरूरत है। नहीं, I'm not just telling it, I mean it. Yes. Because women are going. There are a lot of schemes that are coming up. Even in project. They are doing better than men this time. And I think men are suffering because of women getting special places. I think men are suffering for it because of it. Yes, because you have reservations for women. You have a number of reservations for women. I think that we should not be having that. Not anymore. So, thank you. I hope I have been helpful. सबका हो गया क्या? Yes, ma'am. Done. Thank you. I'm not used to all this. I really enjoyed it. Thank you very much, ma'am. नहीं ये चीजें बहुत जरूरी होती है हमारे लिए, ये बैंक का फिर ये जो मसला है ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। Ultimately it is all that is needed. So इसीलिए इनको भी आप लोगों को I am your what do you say neighborhood? मैम एक्चुअली हमारे SKUAST के अंदर ही JNK में ब्रांच थी, वहाँ की ब्रांच मैनेजर है मैम। मैडम has almost
भी कुछ भी चाहिए होगा you can contact madam that I can just with full confidence. I request Hari तरफ से. Thank you so much. Forward me the thanks. हाँ मैं वो मेरा नंबर